everyone, welcome back to Rebind AI channel. I am Krishna and आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एक्सप्लेनेबल एआई आल्सो नोन एज XAI। अब टाइटल देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, थोड़ा टेक्निकल होगा, बट रिलैक्स। आई प्रॉमिस यू कि ये सेशन के एंड तक, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम बिगनिंग से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस तक जाएंगे। और यहाँ इस पूरे सेशन में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बट we will also be having some coding part and also some demos. Okay, so ये हमारा सेशन 1 है। टोटल 3 सेशंस रहने वाले हैं। सो आज हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी 2 सेशंस में हम लाइन, शैप, काउंट ऑफ एक्चुअल्स और रिस्पॉन्सिबल एआई कवर करेंगे। ओके, सो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम पूरे 3 सेशंस में हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो वी विल बी कवरिंग 6 टॉपिक्स इन दिस 3 सेशन। सो पार्ट 1, दैट इज व्हाई एक्सप्लेनेबिलिटी मैटर्स, यानी एआई का ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। पार्ट 2, द XAI लैंडस्केप, दैट इज XAI के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। पार्ट 3, लाइन, एक पॉपुलर टेक्निक। पार्ट 4, शैप, एक पावरफुल टेक्निक। पार्ट 5, दैट इज काउंट ऑफ एक्चुअल एक्सप्लेनेशंस, जो व्हाट इफ वाले एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो। पार्ट 6 इज रिस्पॉन्सिबल एआई, फेयरनेस, बायस और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। ओके, सो आज के सेशन में हम सिर्फ 2 पार्ट्स कवर करेंगे, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब फाउंडेशन। बाकी के पार्ट्स हम आगे के सेशंस में कवर करेंगे। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एआई की एक्सप्लेनेबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई। यस, चलिए इसे समझते हैं। देखो, आजकल जो एआई मॉडल्स हम यूज करते हैं, जैसे डीप लर्निंग मॉडल्स या कॉम्प्लेक्स एंसेंबल मॉडल्स, ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, राइट। मतलब प्रिडिक्शन बहुत सही देते हैं हमें, है ना। पर एक प्रॉब्लम है, ये मॉडल्स अपनी रीजनिंग नहीं बताते। मतलब आपको सिर्फ आउटपुट मिलता है, बट व्हाई वो आउटपुट आया ये पता ही नहीं चलता। यस, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। समझा सबको व्हाट इज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम वो है जिसमें वी डोंट हैव रीजन कि ये आउटपुट क्यों आया। ओके, इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। सोचो, एक एग्जाम में आपको सिर्फ मार्क्स मिल रहे हैं, पर टीचर ने ये नहीं बताया कि कौन सा आंसर गलत था। आप इम्प्रूव कैसे करोगे, है ना। सेम प्रॉब्लम एआई के साथ है। अब आप यहाँ पे इस चार्ट को देखिए। ये दिखता है कि जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, लीनियर रिग्रेशन से लेकर डीप न्यूरल नेटवर्क तक उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है। यस, यू कैन सी दैट। हमने यहाँ पे एक्यूरेसी वर्सेस इंटरप्रिटेबिलिटी का ग्राफ बनाया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक बॉक्स ये शो कर रहा है। एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है। यू कैन सी, ये लाइन देखो, एक्यूरेसी का लाइन है यहाँ पे, ये इंटरप्रिटेबिलिटी का लाइन है। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेबिलिटी यानी समझ आना कम होता जाता है। यस, यू कैन सी ड्रॉपिंग ऑफ द इंटरप्रिटेबिलिटी। इंटरप्रिटेशन कम होता जा रहा है। यस, ये है वो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ जिसको XAI सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पे 3 जोन्स याद रखो। द फर्स्ट वन इज व्हाइट बॉक्स, जैसे लीनियर रिग्रेशन, दैट इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट, हार्ड डिसीजन एक फॉर्मूला से ट्रेस हो सकता है। सेकेंड वन इज ग्रे जोन,
दैट इज जैसे रैंडम फॉरेस्ट जो पावरफुल है बट रीजनिंग थोड़ी टैंगल्ड हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज ब्लैक बॉक्स जैसे कि डीप लर्निंग, ये नियर ओपे, दैट इज बिना एक्स्ट्रा टूल्स के समझाना मुश्किल है। ओके, सो यू कैन सी दिस, ये ड्रॉप होते जा रहा है इंटरप्रिटेशन यहाँ पे। यस, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो इसे, जैसे लेट्स से क्या एग्जांपल ले सकते हैं। यस, अगर आप एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हो जो बोलता है सैलरी आपका 2x एक्सपीरियंस प्लस 20,000 है, तो ये क्रिस्टल क्लियर है, आप एग्जैक्ट फॉर्मूला देख सकते हो, राइट? पर अगर आप एक डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हो जिसमें लाखों पैरामीटर्स है, उसमें ये बताना कि एग्जैक्टली कौन से फैक्टर ने इस डिसीजन को अफेक्ट किया बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? समझा यहाँ तक? आगे बढ़े। अब चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ओके, सो वी विल बी हैविंग थ्री रियल एग्जांपल्स। तो पहला है क्रिमिनल जस्टिस। यूएसए में एक एआई टूल यूज होता था जो प्रिडिक्ट करता था कि कोई एक्यूज्ड दोबारा क्राइम या करेगा या नहीं, कोर्ट में बेल डिसीजंस के लिए। ओके, सो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पाया कि ये टूल कुछ रेशियल ग्रुप्स को बार बार हाई रिस्क बताता था जितना उनके एक्चुअल आउटकम्स जस्टिफाई करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को भी क्लियरली नहीं पता था कि व्हाई ये डिसीजन आया। यस, द सेकेंड वन इज हायरिंग। एक बड़ी टेक कंपनी ने अपने इंटरनल एआई रिक्रूटिंग टूल बंद कर दिए जब उन्हें पता चला कि वो टूल ऑटोमेटिकली उन रेज्यूमेस को डाउनग्रेड कर रहा था जिनमें वुमेन्स जैसा वर्ड था, जैसे विमेन चेस क्लब कैप्टन। ये बायस हिस्टोरिकल हायरिंग डेटा से आया था जहां पहले ज्यादा मेन हायर हुए थे। ओके, एंड द थर्ड वन इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। एक वाइडली यूज्ड हेल्थ रिस्क एल्गोरिदम सीकर ब्लैक पेशेंट्स को कम प्रायोरिटी दे रहा था क्योंकि वो हेल्थ केयर कॉस्ट को मेडिकल नीड का प्रॉक्सी मान रहा था, जो कि एक गलत अजम्पशन थी, राइट? सो अब सोचो अगर इंडिया में लाइक इंडिया में भी कल कोई लोन अप्रूवल एआई सिस्टम से ऐसा कुछ करता है, जैसे किसी को सिर्फ उसके पिन कोड की वजह से लोन रिजेक्ट कर दे, तो कस्टमर पूछेगा मुझे लोन क्यों नहीं मिला? और अगर कंपनी के पास इस सवाल का आंसर ही नहीं है, तो ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ट्रस्ट और लीगल प्रॉब्लम भी बन जाता है, राइट? सो ये तीनों केस में एक कॉमन चीज है, किसी को भी पता नहीं था कि एआई ने ये डिसीजन क्यों लिया। व्हाई व्हाई आंसर्ड ही नहीं है कहीं पर भी। यही गैप XAI फिल करता है। ओके, यस, सो आगे बढ़ने से पहले कुछ डेमोज देखते हैं। सो विल बी स्विचिंग टू कोलैब। ओके, सो लेट्स स्विच टू कोलैब। यस, सो दिस इज कोलैब। तो हम सबसे पहले डेटा सेट क्रिएट करेंगे हमारे डेमो के लिए। ओके, सो यही डेटा सेट हम सारे इसके लिए यूज करेंगे, तो हम यहीं पे एक कॉमन डेटा सेट प्रिपेयर करते हैं सारे डेमोज के लिए। ओके, सो हम एक सिंथेटिक लोन अप्रूवल के लिए डेटा सेट बिल्ड कर रहे हैं यूजिंग numpy pandas। ओके, सो कहीं से भी हम कुछ डाउनलोड नहीं कर रहे डेटा सेट, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोन अप्रूवल के लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डेटा सेट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम
Scalon dot model selection import train test split. So यहाँ पे हम np dot random seed 42 n equals 800 is df equals to यस सो यहाँ पे हमने एस्केलॉन इसलिए इंपोर्ट किया है सो दैट हम हमारे ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट कर सके और यहाँ पे np.random.seed equals to 42 क्या करता है इट मेक्स ऑल द रैंडम नंबर्स रिप्रोड्यूसिबल ठीक है सो यानी जब भी हम ये रन करते हैं सेल को सो यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम डेटा सेट विदाउट दिस द नंबर्स वुड बी डिफरेंट ईच रन ठीक है और बाद में n इक्वल्स टू 80 यानी यहाँ पे यू आर क्रिएटिंग 800 फेक कस्टमर्स दैट इज योर रोज उसके बाद हम फेक डेटा सेट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं सो df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम्स यस इनका mp dot random dot random 2160 comma एक सेकेंड 15,000 1,20,000 comma and let's say age np dot random dot random एज में क्या डालेंगे हम 21 60 and comma let's say credit score np dot random let's say be 300 900 and then existing loans np dot and 0 comma 4 comma m
Now here this creates a table with 800 rows and 4 columns each, filled with random integers in a realistic range. Okay, getting? And here what we have written, this all creates rows. Now let's move further. Now here we will be creating a hidden logic for loan. So yes, first for that let's add a comment that is rule based true approval. Okay, so let's start. Score equals let's say 0.0004 multiplied by TF income plus 0.0015 multiplied by TF credit score minus 0.3 multiplied by TF existing loans. Okay, plus NP dot random dot normal 0.5 comma n. DS loan approval equals score greater than score dot median dot S type int. So this is the most important part. You are manufacturing a believable pattern for your models to later learn. So यहाँ पे 0.004 multiplied by income. यहाँ पे ये higher income nudges the score up and
Higher credit score nudges the score up, and minus 0.3 into existing loans, that is more existing loans, nudges the score down. That is very riskier. Okay. And here we have written np dot random dot normal. This adds random noise, that is real world randomness or unpredictability. So it's not a perfectly clean rule. This is what makes 88 to 89 accuracy realistic instead of 100%. And then we are comparing score is greater than score dot median. So anyone above the median score gets true, that is approved, and everyone below gets false, that is rejected. Okay, now let's move further. यहाँ पे loan approved becomes your target variable, what the models will try to predict. Okay, so now let's start splitting into train and test sets. So yes, let's do that. Splitting the data into train and test sets. So yes, x equals to df dot top columns equals to loan approved y. Yes. So here x is equals to the input four features, that is income, age, credit score, and existing loans. Y is your target, that is loan approved. And yes, and here your train test split is your test side equals to zero point 0.2, that is it splits data. So 80% that is used to train the models and 20% of it is held back to test how they will predict on the data haven't seen before. And random state equals to 42, again just for reproducibility of the split itself. Okay, so now let's just print it. Bracket is missing. Okay, so now let's just print. So print tf dot head. Now let's run this cell. It will run the first 5 rows so you can visually see what's happening and you can see how the data looks like. Just a second. This is how it looks like from our 800. They have top pick the first five: income, age, credit score, existing loans, and loan approved. Okay.
This is how it looks like. So our data set is created now. Now we will be working on white uh, white box model. Okay. So let's start with that. Let's give the comment white box model. So before white box model, we'll be importing some libraries. So first let's do that from sklearn dot linear model from sklearn dot ensemble import random forest classifier. तो यहाँ पे हमने तीन चीजें import किए. Logistic regression, so that your white box model, it is transparent and formula based. Next is random forest classifier, your black box model, many decision trees voting together. And the third one is accuracy score, a function to measure what percentage of predictions were correct. Okay, so now let's start with our white box model. Yes, let's start. Log model equals to logistic regression max iteration equals to 1000. Okay, model dot text.
So here, logistic regression, we have created the model where max iteration is 1000, just gives the training algorithm enough attempts to converge on a solution. And here, this is the actual training step. The model looks at the 640 training rows, that is your 80% data, and learns from the relationships between the four features and loan approved. And dot predict X test, the trained model makes predictions on the 160 unseen test rows, and accuracy compares those predictions against the actual known answers and returns a percentage of how many got right. Okay, now let's move further. Print um, logistic regression the formula for feature coefficient and x dot comma log model dot coefficient p print. Six F. Okay, so here what happens? Here what happens when you see log model dot coefficient 0. This is the key white box moment, that is logistic regression internally learns one weight coefficient per feature, literally the formula it uses to make decisions. And here zip x dot columns and log model, it pairs each column name, that is income, age, and etc. with its corresponding learned weight. The loop prints each one. Okay, and here plus 6f, it is the formatting always shows a plus 0 or minus sign with 6 decimal places. So tiny weights like incomes are still visible. Okay, so now let's move further. Print, let's come out of the for. Yes. So here 2% formats a decimal like 0.88125 as a percentage with 2 decimal places to 80 to 8.13%. Okay. Now let's move further.
print \n plus equals to multiplied by 50 plus \n. Here equals to multiplied by 50 repeats the character 50 times to make a clean divider line on screen, and purely cosmetic makes it easy for viewers to see, okay, what white box output ends and black box output begins. For that, we have written this line. Now, let's move further. Now we'll be starting with black box model. So let's get started. Random forest classifier with n estimators equals to 200, comma, random state equals to 42. Here, the random forest builds 200 individual decision trees internally, each trained on a slightly different random subset of the data, then averages the votes across all of them for a final prediction. And this is exactly why it's a black box. There isn't one clean formula there. 20, there are 200 trees worth of logic combined. And again, random state equals to 42, that is for reproducibility. Okay, let's move further. Here, sample equals to x test prediction equals to r model dot predict is sample. See, here x.inoc0 grabs just the first row of the test set, and note the double brackets. This keep it as a data frame, that is a table with one row rather than a plain array. And dot predict expects a table like input. And here we have written rf model dot predict sample 0. This runs the prediction for that one customer, and 0 pulls out a single result from the returned array. Okay, now let's move further. Let's say print random forest, just the output. Okay,
Then let's print sample. Then let's print a prediction of if prediction equal to 1. Okay, else rejected. Print f accuracy. R ACC 2%. Now here it prints that one customer's raw features values, that is income, age, credit score, and existing loans. The prints only the final decision, no weights, and approved if prediction equals to 1, else rejected. It is a compact inline if else called a ternary expression that converts the 1 or 0 output back into a human readable word. Okay, now let's run this. Okay, okay, spelling is wrong. See, this is the line between white box and black box. This is your white box. This is your black box. Income, age, credit score, existing and all. Yes, you can see this. So हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, राइट? सो हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कोएफिशिएंट्स दिए हुए थे. यस, कैन यू सी? यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो, प्रिडिक्शन हुआ है रिजेक्टेड. यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है. ओके, और इस मॉडल के पास सीधा जवाब नहीं है. लाइक इस मॉडल के पास जवाब ही नहीं है ना कि ये डिसीजन क्यों आया. ये वाले ब्लैक बॉक्स वाले मॉडल के पास है कोई जवाब. सो यही है ब्लैक बॉक्स वर्सेस व्हाइट बॉक्स का रियल फर्क. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. एक और हम देखेंगे कि हम लोग ना
एक और अभी एक देखेंगे डेमो. Okay, so let's start. Yes, so we'll be seeing demo on mystery black box. Yes, so this is the code I have written. Let's run it. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो हम ना एक इंटरैक्टिव अभी सेशन लाइक करते हैं. यहाँ पे आप स्क्रीन पे दे सकते हो 3 कस्टमर्स है, कस्टमर 1, 2 एंड 3, जिनके प्रोफाइल्स है इनकम, एज, क्रेडिट स्कोर, एग्जिस्टिंग लोन्स. ओके, सो नाउ आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में गेस करो लाइक कस्टमर 1 का लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, एंड व्हाई. आपको ऐसा क्यों लगता है? जस्ट थिंक ऑफ इट. ओके, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम. उसके बाद हम वो भी देखेंगे आपका आंसर राइट है रॉन्ग है. जस्ट थिंक अबाउट इट. सो हमने ये कोड में क्या किया है वो भी समझते हैं. सो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रैंडमली कोई 3 रोज पिक किए हुए हैं हमारे 160 टेस्ट सेट कस्टमर्स में से. सो दिस गिव्स यू अ स्मॉल बट मैनेजेबल सेट टू शो. यस, आउट ऑफ ऑल 160. और हमने रैंडम स्टेट 7 सेट किया हुआ है. दैट इज सेम रिप्रोड्यूसिबिलिटी आइडिया एज बिफोर. ओके, और बाद में हमने यहाँ पे डॉट रिसेट यूज किया हुआ है. आप यहाँ पे दे सकते हैं डॉट रिसेट इंडेक्स drop equals to true. This is a small but important cleanup step when you dot sample rows out of X test. Pandas keeps their original index numbers. Example के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि row 143, row 87, row 12, whatever their position was in the original data set, that can be reset. And this throws away those original index labels and renumbers them as you can see customer 1, 2, and 3. Sorry, name 0, 1, and 2, like as you have seen. Okay, so now it's time. आपने अब तक सोच लिया होगा. So next कोड लिखते हैं और actual output. Yes. So हमने यहाँ पे for loop लगाया है just to see if it is approved or not. This is for customer 1, customer 2, and customer 3. Approved, and rejected. So just see your guess was correct or not. So यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है लाइक अगर मैंने आपको पूछा ये एग्जैक्टली आप कैसे आया, क्यों आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि ये अप्रूव्ड है रिजेक्टेड है क्या है. हाँ, जस्ट थिंक ऑफ इट. मे बी आप लोग बोलोगे कि क्रेडिट स्कोर की वजह से हुआ होगा या इनकम कम थी, बट ये सिर्फ तो एक गैस हुआ ना, कंफर्म थोड़ी है. यही है वो गैप जो रियल वर्ल्ड में लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है जब बैंक बोलता है आपका लोन रिजेक्ट हो गया है और कोई रीजन नहीं देता. ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे एक और डेमो दैट विल बी ऑन एक्यूरेसी वर्सेस इंटरप्रेटेबिलिटी का स्कोर बोर्ड.
Okay, so let's do that. Let's code for it. Let's start. Yes, so from sklearn dot create import decision tree classifier enter from sklearn dot ensemble import random classifier comma gradient boosting classifier from sklearn dot linear model import logistic regression. Yes, from sklearn dot metric import accuracy score. Yes, now models equals logistic regression. Logistic regression max iteration we have set to 1000. Okay, and next, uh, let's talk about easy max depth equals to 3, random state equals 42. Yes, then comma
इजी, विजुअल, 'Then let's come to random forest. Random forest classifiers, estimators 200, random state 42, 200 trees molting, then comes gradient boosting, classifier, random state, okay. 42, very hard, it's sequential corrections. Now let's try the print statement. Print f x, yes. तो अब यहाँ पे हम इस ट्रेड ऑफ को एक चार्ट की तरह देखेंगे एक रियल नंबर्स के साथ. मैंने यहाँ पे 4 मॉडल्स लिए, आप देख सकते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, सेम लोड डेटा पे. ओके, एक से फॉर नेम मॉडल. Just a second. यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कोर बोर्ड जहाँ पे मॉडल है, एक्यूरेसी है, कैन यू एक्सप्लेन इट इजीली लिखा हुआ है. ओके, सो यस, जैसे जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं एक्यूरेसी बढ़ रहा है, बट ग्रेडियंट बूस्टिंग और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक्यूरेसी सेम ही आप देख सकते हैं. पर साथ में देखो ये थर्ड कॉलम जो है जहाँ पे कैन यू एक्सप्लेन इट इजीली में आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे देख सकते हो इजी लिखा है, पर ग्रेडियंट बूस्टिंग पे वेरी हार्ड. ओके, ये वही ट्रेड ऑफ है जो हमने हमारे स्लाइड में चार्ट में देखा था. अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आपके सामने लाइव नंबर्स है.
ओके, सो ये वही गैप है जो अगले 2 सेशंस में हम लाइम और शैप से कवर करेंगे। Yes. Now let's get back to our slides. Yes, so now let's move further. अब जब हमने पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए पार्ट 2 में देखते हैं एक्स ए आई एक्चुअली है क्या और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन, एक्सप्लेनेबल एआई दैट इज एक्स ए आई उन टेक्निक्स का सेट है जो एआई के डिसीजंस को ह्यूमंस के लिए समझने लायक बनाता है। मतलब सिर्फ व्हाट नहीं बल्कि व्हाई भी समझाता है। ओके, सब क्वेश्चन ये है इसकी जरूरत किसको है? द फर्स्ट आंसर इज डेवलपर्स को, अपना मॉडल डिबग करने के लिए। एंड यूजर्स को, जैसे आप और मैं, ट्रस्ट चाहिए और अगर कुछ गलत हो तो रिकोर्स चाहिए, यानी करेक्शन का पाथ चाहिए, राइट? द थर्ड वन इज रेगुलेटर्स और ऑडिटर्स को भी इसकी नीड है। क्यों? बिकॉज कॉम्प्लायंस चेक करने के लिए, और बिजनेस लीडर्स को भी इसकी नीड है। यस, जो एआई ड्रिवन डिसीजंस के पीछे खड़े होते हैं उन्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप एक बैंक में डेटा साइंटिस्ट हो और आपका मॉडल किसी कस्टमर का लोन रिजेक्ट कर देता है। अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, तो ना तो आप मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हो, ना ही कस्टमर को कुछ जस्टिफाई कर सकते हो, राइट? सो ना रेगुलेटर्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। इसलिए आज के टाइम में जैसे जैसे एआई हायरिंग, लेंडिंग, हेल्थ केयर और जस्टिस जैसे सेंसिटिव एरियाज में यूज हो रहा है, एक अनएक्सप्लेनेबल नो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो ना लीगली, ना एथिकली, ना बिजनेस वाइज कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो चलिए अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से बताऊंगी, इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है? यस, सो हर एक्सएआई टेक्निक को हम दो एक्सेस पर रख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लोकल एंड द सेकंड वन, यस, सो फर्स्ट एक्सेस इज लोकल वर्सेस ग्लोबल। यस, लोकल मेथड सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन एक्सप्लेन करते हैं, जैसे रमेश का लोन क्यों रिजेक्ट हुआ। और जो ग्लोबल मेथड्स होते हैं वो पूरे मॉडल का ओवरऑल बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये मॉडल ओवरऑल किस टाइप के लोगों को अप्रूव करता है। ओके, सो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, समझ आया? द नेक्स्ट वन इज मॉडल स्पेसिफिक वर्सेस मॉडल एग्नोस्टिक। तो मॉडल स्पेसिफिक मेथड्स सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के मॉडल के साथ काम करते हैं, लाइक जैसे सिर्फ ट्री बेस्ड मॉडल्स के लिए। और मॉडल एग्नोस्टिक मेथड्स किसी भी मॉडल के साथ काम करते हैं, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क हो या रैंडम फॉरेस्ट, उसे ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, और एक थर्ड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंट्रिंसिक वर्सेस पोस्ट हॉक। यहाँ पे इंट्रिंसिक मतलब मॉडल डिजाइन से ही इंटरप्रिटेबल है, जैसे एक छोटा डिसीजन ट्री जिसमें सिर्फ 3-4 लेवल्स होते हैं। और पोस्ट हॉक मतलब मॉडल कॉम्प्लेक्स है, पर उसके बाद हम एक सेपरेट टेक्निक यूज करके एक्सप्लेनेशन निकालते हैं, जैसे लाइन और शैप। ओके, सो यहाँ पे आप ये याद रखना कि लाइन और शैप दोनों पोस्ट हॉक और मॉडल एग्नोस्टिक है। एंड फर्क सिर्फ इतना है कि लाइन सिर्फ लोकल एक्सप्लेनेशंस देता है और शैप दोनों लोकल और ग्लोबल दे सकता है। सो ये हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट सेशंस में कवर करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो अब इस कंसेप्ट को हम एक विजुअल तरीके से समझेंगे, दैट इज ट्रांसपेरेंसी स्पेक्ट्रम। सोचो एक लाइन है, लाइक
एक तरफ है मोर ट्रांसपेरेंट यानी व्हाइट बॉक्स और दूसरी तरफ है मोर ओपेक यानी कि ब्लैक। इस स्पेक्ट्रम पे सबसे ट्रांसपेरेंट साइड पे लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर आता है डिसीजन ट्रीज, फिर आता है रैंडम फॉरेस्ट। यस, ये हमने उसी तरीके से यहाँ पे शो किया हुआ है। देन आता है ग्रेडियंट बूस्टिंग जैसे कि एक्सजी बूस्ट। देन कम्स आर the opaque one, most opaque one, that is deep neural networks. Let's understand this with an example. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक रेसिपी और एक मास्टर शेफ का इंट्यूशन। अगर रेसिपी लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप तो कोई भी समझ सकता है कि डिश कैसे बनी। पर अगर शेफ बोलता है मुझे बस पता है इसमें क्या क्या डालना है, रिजल्ट अच्छा हो सकता है पर प्रोसेस समझना मुश्किल है, राइट? यही एग्जैक्टली डीप लर्निंग के साथ होता है। अ, और यही जगह है जहां XAI स्टेप इन करता है। जो मॉडल स्पेक्ट्रम के राइट साइड पे है उनके लिए लाइन, शैप और काउंटर फैक्चुअल जैसे टेक्निक्स वो ट्रांसपेरेंसी वापस लाते हैं जो मॉडल की आर्किटेक्चर नेचुरली नहीं देती। ओके, दिस आर द राइट साइड मॉडल्स यू कैन सी। सो लेट्स हैव अ क्विक डेमो। लेट्स स्विच टू कोलैब। यस, सो इट्स ऑन डिसीजन ट्री विजुअलाइजेशन। यहाँ पे हम एक शैलो डिसीजन ट्री को ट्रेन करेंगे, दैट इज लाइक मैक्स डेप्थ 3 रखेंगे सो इट्स इज रीडेबल ऑन द लोन डेटा सेट। ओके, एंड देन हम उस ट्री को विजुअली प्लॉट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम sklearn dot tree import decision tree classifier comma plot tree import matplotlib। यहाँ पे ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करता है प्लॉट करने के लिए। ओके, plot by plot and yes, then अपना ट्री मॉडल equals to decision tree classifier equals to decision। यहाँ पे हम उनको मैक्स स्टेप्स देंगे and train model dot fix equals to explain comma y train plot figure। यहाँ पे figure size let's say we'll be giving 18 and 8 and then plot tree model comma feature maps x dot columns comma class name let's say class name equals to rejected and approved। Okay, so class name equals to rejected and approved and field equals to true and also let's type comma rounded equals to true comma let's give the font size also, font size equals to let's say 10। Yes, then
Let's give the title for the plot. Dot title. Yes. So what title should we give? Let's decision tree. Um, fully traceable logic. And what should be its font size? Let's say 14. Now plot dot show. Now let's run this. सो हम ये ट्रांसपेरेंसी स्पेक्ट्रम को अब लाइव देख रहे हैं। ये देखो मैंने एक डिसीजन ट्री ट्रेन किया है हमारे लोन डेटा पे। आप ये डिसीजन ट्री देख सकते हो, इसका डेप्थ 3 है। यस। सो अब हम इसको साथ में ट्रेस करते हैं। आप टॉप में देखो, यहाँ पे वी हैव इनकम, जीनेस इंडेक्स, सैंपल्स, वैल्यू, क्लास। ओके। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इफ इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6782 8.5। इफ यस तो इट विल कम ओवर हियर। इफ फॉल्स तो यहाँ पे आएगा। फॉल्स हुआ तो लेफ्ट राइट में जाएगा, ट्रू हुआ तो राइट में जाएगा। सो चलिए कस्टमर लेते हैं जिसका लाइक इनकम इज लेट्स से 72,000। तो हम हमारे इनकम इज ग्रेटर देन दिस ना, तो हम यहाँ पे राइट साइड में आएंगे अगर इनकम ग्रेटर है तो। यस। सो फिर हम अगर लेट्स से हमारा इनकम इज यहाँ पे एक और बार आपका चेक हो रहा है, फिर से इनकम चेक होगा। फिर से हम या तो ये साइड आएंगे या तो ये साइड आएंगे। यस। सो 72,000 इज अगेन ग्रेटर देन दिस। यस। ऐसे करके ये वर्क करता है। So, ऐसे कर करके हम यहाँ पे बॉटम बॉटम तक आ जाते हैं। एंड वहाँ हमें फाइनल आंसर भी मिलता है, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। यस। दिस इज हाउ इट इज। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। सो इस तरह से आप डिसीजन ट्री देख सकते हो। ओके। यस। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो आज हमने फाउंडेशन प्रॉपर सीख लिया है। सो यस। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने देखा कि ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या होता है रियल वर्ल्ड में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एक्सएआई की डेफिनेशन, उसकी टेक्सोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी स्पेक्ट्रम, ये सब हमने आज कवर किया। और अगले सेशन में हम कोर टेक्निक्स पे ध्यान देंगे, दैट इज लाइन, यानी कैसे एक लोकल सेरोगेट मॉडल किसी भी प्रिडिक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है। साथ में एक we will be having a live coding demo on Colab. The second will be seeing is SHAP, यानी कि गेम थ्योरी से इंस्पायर्ड एक पावरफुल टेक्निक, उसके प्लॉट टाइप्स और उसका भी लाइव डेमो हम देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज
लाइम वर्सेस शैप, ये एक हम हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे सो दैट आपको भी पता चले कि कब कौन सा टूल यूज करना है. सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट. यस, स्टे ट्यून्ड. एंड यस, सो इट्स अ रैप फॉर आवर सेशन 1. सो यहाँ पे आपको समझा होगा कि XAI क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके बेसिक टाइप्स क्या है. और सो हम बाकी का आगे देखेंगे. एंड इफ यू हैव फाउंड दिस सेशन यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग, then do like, share, and subscribe this channel. And if you have any queries, you can reach out us at biotechrebion@gmail.com. Thank you.